यहाँ पे स्पेस ये समझ लो. ओके, सो a quarter means how many? 1/4. 1/4 means we can write it 0.25. We write quarter as 0.25 also. क्वार्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.25. हाफ. हाफ means what? 1/2. We can write 1/2. 0.50. हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इन अ डेसिमल फ्रैक्शन. दिस इज 1/4. दिस इज अ फ्रैक्शन. ओके, एंड 0.25 दिस इज इन अ डेसिमल फ्रैक्शन. ओके, ऐसे लिख सकते हैं. नाउ 3/4. 3/4. 3/4 means what? 3/4. So 3/4 we can write in a decimal fraction like 0.75. Okay, and after one is whole. 1 को 1 ही लिखेंगे. Correct. So a quarter means 1/4. 1/4 we can write in a decimal fraction 0.25. half means 1/2 in a fraction. fraction में 1/2 लिखेंगे. समझ लो जहाँ पे डेसिमल पॉइंट आता है वहां पे होता है डेसिमल फ्रैक्शन, जहाँ पे अपॉन आता है वो होता है सिर्फ फ्रैक्शन. ओके, सो 1/2 इज अ फ्रैक्शन. वी कैन राइट दिस फ्रैक्शन इन अ डेसिमल फ्रैक्शन लाइक 0.50. 0.50 means what? Half. Now 3/4. 3/4 means what? 3/4. ये वर्ड में लिखा जाता है, ये फ्रैक्शन में लिखा जाता है 3/4. और 0.75 ये किस में लिखा जाता है? डेसिमल फ्रैक्शन में. ओके, वन थिंग वी कैन राइट 3 times. एक वर्ड्स में लिखा जाता है, एक फ्रैक्शन में लिखा जाता है और एक डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा जाता है. ओके, so 3/4 means what? 3/4 equals to 3/4 means what? We can write 3/4 like this also in a decimal form 0.75. If I say 1.5, इसका मतलब क्या होगा? 1.5. हाफ मीन्स वर्ड 0.50. इसके बाद अगर आप 0 दे दो डेसिमल पॉइंट के बाद एंड में, उसको कुछ वैल्यू नहीं होता, तो आप 0.5 भी लिख सकते हो उसे. करेक्ट, 0.5 भी लिख सकते हो. सो when I am not having whole number, that time I am putting 0 for half. Correct, I am putting 0 for half. 0.5, this is my half. Okay, but when I am having my whole number, that time I am putting my whole number first, then I am putting my decimal point. Correct ना? पहले मैं whole number लिखूंगी, उसके बाद में मेरा decimal point दूंगी. So 1 and this half. So how we can write this 1.5 in a decimal form like this? 1.5. Okay, okay. If I'm writing 3 and 3/4, 3 and 3/4. करेक्ट. 3/4 मीन्स व्हाट? मैंने अभी आपको बताया 0.75. 0.75, this is my 3/4, no? But I am having this whole number 3. So what I'll write? 3.3/4 means 3.75. 3.75. Correct? Understood, no? Simple one. 3 और 3/4 मतलब क्या आएगा मेरा? 0.75. Why I have not written here 0? मैंने यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिखा? Because I am having my whole number 3. ये मेरे पास मेरा whole number है 3. So I have written here my whole number 3 and 3/4. Okay. If I'm having 5 and a quarter, 5 and a quarter, what I will write? My quarter means what? 0.25. Correct. मेरा quarter मतलब क्या है? In a decimal form 0.25, and having my whole number 5, so I'll write 5.25. Correct. So how I'll write this 5 and a quarter in a decimal form? 5.25.
करेक्ट, इतना सिंपल सा है प्रॉब्लम सेट 40. ओके, अंडरस्टूड? ओके, वेरी सिंपल वन. नाउ if I want to do the addition, what I'll do? If I have 3.25 and 6.75, these two decimal fractions are there, and question is there, add this to decimal fraction. So what I'll do? Okay, मैं कैसे करूंगी? My first decimal fraction is 3. I'll write my first decimal fraction 3.25. ये मैंने पहले लिख लिया. अब डेसिमल के बाद डेसिमल नीचे ही आएगा. ओके, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट ही आएगा. आई एम हैविंग सेकेंड वन 6.275. ये मेरा सेकेंड वाला फ्रैक्शन है. नाउ आई हैव टू ऐड 3.25 इनटू दिस 6.75. मुझे इस फ्रैक्शन में ये सेकेंड वाला फ्रैक्शन ऐड करना है. तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आएगा. हमेशा याद रखना है, नंबर कहीं पे भी नहीं लिखना है. ओके, सो बिलो दिस डेसिमल पॉइंट आई विल राइट द सेकेंड फ्रैक्शन डेसिमल पॉइंट. नाउ डेसिमल पॉइंट के पहले क्या है? 6, सो आई विल राइट हियर 6. डेसिमल पॉइंट के बाद 10th प्लेस पे क्या है? 7, सो आई विल राइट 7. एंड ऑन द 100th प्लेस व्हाट इज देयर? 5, सो आई विल राइट हियर 5. ओके, सो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, नंबर के नीचे नंबर आ गए. Okay, so we can add now 5 plus 5 10, carry over 1. simple addition, जैसे हम लोग पहले एडिशन करते थे वैसे ही एडिशन. 2 plus 7 9, 9 plus this one 10, so 0, carry 1 over here. अब डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट ही आएगा. आंसर में कहीं पे भी रहने दो, लेकिन अब हम लोग ने कैरी आगे किया, लेकिन डेसिमल पॉइंट तो यहाँ पे ही है ना, 2 प्लेसेस के बाद. तो आंसर में भी 2 प्लेसेस के पहले ही ये डेसिमल पॉइंट आएगा. नाउ 3 plus 6 is 9, 9 plus this one is 10. So my answer is 10.00. बट डेसिमल पॉइंट के बाद अगर नंबर नहीं है, सिर्फ 0 है, तो उसका आंसर होता है सिर्फ 10. उसको कुछ वैल्यू नहीं होता. ठीक है, अगर यहाँ पे होता 5 तो इसको वैल्यू होता, क्योंकि एंड में नंबर है. बट यहाँ पे सिर्फ 0 0 दिख रहा है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 0, इसका मतलब इससे कुछ वैल्यू है नहीं. सो आई विल राइट माय आंसर एज 10. करेक्ट, करेक्ट. इफ आई एम हैविंग नंबर wait, if I am having number 2.6 and 14.775, if I am having like this fraction, डेसिमल फ्रैक्शन है मेरा ये 2.6 and 14.75. नाउ आई वांट टू ऐड दिस. तो मैं कैसे ऐड करूंगी? अगेन सिंपल, 2.6 and 14.75. So what I'll write? I'll write first 2.6 and decimal के नीचे decimal point आएगा. मेरा नंबर है 14.75. So how I'll write? Now at unit place 2 is there, so this 4 is on the unit place, so this 4 will go below this 2. This 1 is on the 10th place. Here 10th place is not there, so I'll write only 1. यहाँ पे 10th place नहीं है ऊपर वाले फ्रैक्शन में, तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया, नीचे वाले का 1 लिख दिया. Now after decimal point 7 is there, so below this 6 I'll write 7. ये 6 के नीचे में 7 लिख दूंगी, because this is after the decimal point, this is on the first place, 10th place. ये decimal point वाले के बाद पहला place है जो 10th place, वहां पे 7 है, तो मैंने 6 के नीचे 7 लिख दिया. Now here no number is there, 10th place 100 place is not there here. Okay, and in the second fraction decimal point is there, second place is there, 100 place is there, so I'll write here 5. Okay, 100 place पे. अब मुझे क्या करना है? एडिशन. हाउ आई डू? अब यहाँ पे कुछ नहीं है, जिसका कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है? 0. ओके, करेक्ट. सो 0 plus 5 5, 6 plus 7 13, so write 3, carry over 1 on the head of the 2. Now put the decimal point, क्योंकि ये तो यहाँ का हो गया एडिशन, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है 2 प्लेसेस के बाद, तो यहाँ पे भी प्लेस आ जाएगा डेसिमल पॉइंट का. 2 plus 4 is 6, 6 plus 1 is 7, 7 and this one will come as it is. So my answer is 17.35.
My answer is 17.35. Very good, Vidisha. Very good. So I hope everyone understood this. Everyone understood this. Simple. If I want to do the subtraction, I'll do the same thing again. हमारा जो normal subtraction होता है वैसे we will borrow. Okay, we will borrow the numbers from the नेक्स्ट नंबर. आगे वाले नंबर से हम लोग बोरो करेंगे. एंड द प्रोसीजर इज सेम. डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस, देन 100th प्लेस के नीचे 100th प्लेस. ओके, यूनिट, टेंस, 100, it will go similarly, but difference is what? Only decimal point is there. That much is the difference. Remaining process is same. I hope everyone understood this. We are going to start problem set. Okay, now I'm going to share my screen. Okay, so simple one, problem set 40. Now only I told you the first one, problem set 40. Write the following fraction as decimal fraction. ये जो following fraction है उन्हें decimal fraction में लिखना है. 2.5. 2.5 over 2 is a whole number. Half means what? 0.50. Correct? But my whole number is there, 2. So on the place of 0, what I will write? 2. 2.50. 50 भी लिख सकते हो या फिर सिर्फ 5 भी लिख सकते हो. Correct? Because after number, if 0 is there, that 0 is not having any value. So you can write 2.50 or 2.5. Okay. Next, 2.25. 2 and means what? Decimal point. And a quarter. Quarter means what? 0.25. So quarter की जगह पे क्या आएगा? 0.25. But 0 is on place of 0. We are having our whole number, that is 2. So what will write? 2.25. 25 means what? Quarter. Okay, correct. Simple one. 14 and 3/4. 14 and 3/4. So 14 is my whole number. 14. Give the decimal point 14 and. So and के place पे क्या दोगे? Decimal point 14 and 3/4. 3/4 means what? 0.75. 0.75. So after decimal point, what you will write? 75. So how you will read this? 14.75. 14.75. Simple one. समझ में आ रहा है सबको? Very simple. Behaving like a. So where were we? The last one, 28.5. Now 28 means this 28 and my half means what? 0.50. Correct? So after decimal point, what I'll write? 50 or I can write 28.5 also, because this 0 is not having value, because it is at the end. Okay, any number is not there after 0 means this 0 is not having any value, so I can write 28.5 also. Okay, so I hope everyone understood this problem set 40. The fractions are given, you have to write in a decimal fraction. Okay, ये बहुत simple सा था. Correct? Now we are moving towards the problem set 41. We are moving towards the problem set 41. Now 41 is again very simple. Convert the following fraction into decimal fraction and add them. We have to convert this fraction into decimal fraction and we have to add them. First is the 1.5 meter. 1.5 meter. Half means what? 50 meter. So first is 1.5 meter. I hope everyone able to see this. I underline the question. 1.5 meter. So 1 and means what? Decimal point. Half meter means 50. Second, 2.5 meter. 2.5
हाफ मीटर मीन्स अगेन 50, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, नंबर के नीचे नंबर्स आ गए. नाउ वी कैन ऐड दिस. ओके, 0 plus 0 0, 5 plus 5 10, carry over 1 on the head of 1. Okay, now decimal point is here after 2 places, so here also in the answer after 2 places. Okay, after means before, यहाँ पे before आएगा क्योंकि हम लोग पीछे से कर रहे हैं ना एडिशन. we are doing from the right side and we are going to the left side, so before this 0 we will put the decimal point, because in the question also before two numbers decimal point is there. That's why in the answer also before these two places we'll put the decimal point. Now 1 plus 2 is 3, 3 plus this one is 4, so our answer is 4 meter. Our answer is 4 meter. 4.00 means what? 4 only ना, ये दोनों 0 है मतलब इसका कुछ वैल्यू है नहीं, so 4.00 मीटर मीन्स व्हाट, वी कैन राइट इट 4 मीटर ऑल्सो. हम लोग इसे 4 मीटर भी लिख सकते थे. ओके, नाउ सेकेंड, 4 and 3/4 rupees and 7 and quarter rupees. 4 and 3/4 rupees. 4 and 3/4 मतलब क्या बताया मैंने? 3/4 means what? 7/5. 4 and 3/4 rupees. So I'll write here rupees. Okay, and 7.25 rupees. 7.25 rupees. So 7 and के जगह पे मैं क्या लूंगी? Decimal point. And quarter. Quarter means what? 0.25. 0.25. Correct? Now what I'll do? I'll do the addition. मुझे क्या करना है इन लोग इसका addition. Again 5 plus 5 is 10. Put 0. Carry over 1. 7 plus 2 9. 9 plus 1 10. 10 again put 0. Carry over 1. Now before this 2 0 we will put the decimal point. We will put the decimal point because decimal point के नीचे ही आंसर में भी decimal point आएगा. 4 plus 7 11. 11 plus this one 12. So when we add 4.25 rupees and 7.25 3/4, sorry, 4.75 rupees and 7.25 rupees, that time we are getting 12 rupees. That time we are getting 12 rupees. So our answer is rupees 12. Rupees 12. Okay, correct? Understood? Now this third I am not going to do because you will do this. सब कुछ तो मैं नहीं करके देने वाली ना, तो ये थर्ड वाला आप करोगे. Now from the question number 2. Now question number 2. 35.74 plus 35.74 and 816.6. 816.6. तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा. This 6 on the 10th place, so it will come below the 7 on the 10th place. Correct? तो ये इसके नीचे ही आ जाएगा. Now after 6 is not any number is not there, so I'll put 0. अगर 0 लिखा नहीं लिखा तो भी उसका वैल्यू नहीं होता. So here number is not there. For addition I want number, so I'll put here 0. Because after decimal point number के बाद अगर 0 आता है तो that 0 is not having any value, so I'll put here 0. Now this 6 is on the unit place, so I'll put below the 5. This one is on the 10th place, so I'll put below the 3. And this 8 is on the 100th place, so 100th place is not there, so I'll write here only. क्योंकि 100 place है ही नहीं तो उसे मैं अकेला ऐसे ही लिख दूंगी. Okay. Now 4 plus 0 4. 7 plus 6 13. तो 3 लिख दिया. Correct? So I'll carry over 1 over here.
अब डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आएगा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद दो दो प्लेसेस है, तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद दो प्लेस आ गए, तो आई पुट डेसिमल पॉइंट हियर. ओके, नाउ 5 plus 6 is 11, 11 plus 1 is 12. Write 2, carry over 1. Okay, so 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, and this 8 will come as it is. So my answer is 852.34. So my answer is 852.34. When I add 35.74 plus 816.6, that time I'm getting answer 852.34. समझ में आ रहा है क्या आपके? Okay, I hope this is a very simple one and everyone understood it very well. Okay, I'm taking third for you people. 6.95 and 6.95 and 74.88. See how I wrote over here. Now 9 plus 8, sorry, 5 plus 8 is 13. So write 3, carry over 1. 9 plus 1, 10. 10 plus 8, 18. Write 8 here. Carry okay. So put the decimal point over here. 6 plus 4 is 10. 10 plus 1 is 11. So write 1 here. Carry over 1 on the head of 7. 7 plus 1 is 8. So 81.83. 81.83 is my answer. Okay? समझ में आ रहा है सबको ये? Very simple one. Correct? आपको क्या करना है? सिर्फ डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लेना और नंबर्स लिखना है. Now I'll take from the question number 3 this 2. Okay, question number 3 से मैं only question number 2 ले रही हूँ because everything is same. 94.7 94.9 बेटा 94.7 meter and 1738.45 meter. So I'll put here decimal point 45 meter and 1738. So 1738 का 8 आएगा unit place पे, 3 will go on the 10th place, 7 will go on the 100th place, 1 will go on the 1000th place. Now I'll do the addition. Okay, now on the head of 5 no number is there, so I'll put 0. 0 plus 5 5, 0 plus 5 5, 7 plus 4 11. So I'll put 1 here. I'll carry over 1 on the head of 4. I'll put the decimal point over here. 4 plus 8 is 12. 12 plus 1 is 13. So write 3. Carry over 1. 9 plus 1 10. 10 plus this 3 30. Write 3 here. Carry over 1 on the head of 7. 7 plus 1 is 8. And 1 will come as it is. So my answer is 1833.15. 1833.15. I hope everyone understood this. Very simple one. कितना simple सा है ये. Now we'll do the subtraction. Here we finish the problems at 41. Now we are going to start the problems at 42. Very simple one. ये भी simple है subtraction. Everyone know how to subtract. So again simple. Subtract the following. Question number 1. Subtract the following. 25.74. 24.74 minus 13.42. 13.42. Now do the subtraction. 4 minus 2 2. 7 minus 4. 7 में से 4 गए, कितने बचे? 3. Now again put the decimal point. Procedure is same. Only we are doing addition and we are doing subtraction. बाकी procedure same ही है. Now 5 minus 3. अब यहाँ पे दो places के पहले decimal point है. That's why in answer also we'll put decimal point before two places. So 2 and 3 के पहले हम लोग क्या देंगे? Decimal place. So 5 minus 3
2, and 2 minus 1 is 1. When we subtract 25.74 minus 13.42, that time we are getting answer 12.32. 12.32. Understood? Understood everyone? I am solving third one. सेम ही है, कुछ डाउट है तो पूछो. 63.4 minus 31.8. This is my question, third one. Now, 4 minus 8 is not possible. So what this 4 will do? This 4 will carry 1 from this 3. So here 14 is there. Now, 3 gives 1 to this 4. So here 2 will remain. 3 ने यहाँ पे 1 दे दिया तो इसके पास 14 हो गया, लेकिन 3 के पास कितना हुआ? 2. करेक्ट. नाउ 14 minus 8 कितना होता है? टेल मी. 6. करेक्ट. The decimal point. 2 minus 1 is 1. 6 minus 3 is 3. So my answer is 31.6. My answer is 31.6. Correct? Understood? Very simple one. Now I'll solve the sixth one. I'm taking random examples because the exercise is very easy. 8.23 minus 5.45. 5.45. 3 minus 5 is not possible. So what this 3 will do? This 3 will carry 1 from this 2. तो 3 के पास हुआ 13 और 2 ने 1 दे दिया तो 2 के पास कितना बचा? 1. बट 1 minus 4 is possible. नहीं, 1 में से 4 जाएगा क्या? नहीं. So what this one will do? This one will carry 1 from this 8. तो 8 ने इसे 1 दे दिया तो इसके पास हो गया 11. Okay, but this 8 gives 1 to this one. तो 8 के पास कितना बचा? 7. And 7 minus 5 is possible. तो हम लोग अभी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. 13 minus 5, 13 में से 5 गया, कितना बचा? 8. 11 minus 4, 11 में से 4 गया. Do the subtraction. 11 minus 4, 7. Correct? No. 7 plus 4 is 11. No. So 7 will remain. Decimal point will come down here. And 7 minus 5 is 2. So if I subtract 8.23 minus 5.45, that time I'm getting answer 2.78. 2.78. Understood, beta? Understood, everyone? Okay. Now I'm solving the last one for you from question number 1. 78.03 minus 41.65. Correct? Now again we'll do the borrowing because 3 minus 5 is not possible. So 3 ने इसके पास से 1 मांगा, but 0 is not having any number. So 0 will borrow from this 8. So this 8 ने यहाँ पे 1 दे दिया तो 8 के पास बचा 7 और ये 0 के पास हो गया 10. 0 के पास हो गया 10. But this 0 remembers this 3 wants 1. तो ये 10 ने क्या दिया? इसे भी 1 दे दिया तो 10 के पास कितना बचा? 9 ना, और 10 ने इसे 1 दे दिया तो इसके पास हो गया 13. ओके, समझ में आ रहा है? 3 minus 5 is not possible. तो क्या किया इस 3 ने? बाजू वाले से 1 मांगा, लेकिन यहाँ पे था 0 तो इसमें से तो जाएगा नहीं कुछ. तो ये 0 ने उसके आगे वाले नंबर से 8 से 1 बोरो किया तो 8 के पास कितने बचे? 7. 7 remains. ओके, हियर. एंड यहाँ पे हो गया 0 के पास 10 हो गया, बट दिस 10 gives 1 to this 3. इस 10 ने 3 को 1 दे दिया तो 10 minus 1 is 9. 10 minus 1 is 9. Now subtraction we can do. 13 minus 5. 13 minus 5 is 8. 9 minus 6 is 3. 9 minus 6 is 3.
Put the decimal point. Put the decimal point. 7 minus 1, यहाँ पे बचा 7, तो 7 minus 1 6, 7 minus 4 3, so my answer is 36.38. my answer is 36.38. simple one, correct? कितना simple सा है. now the last question, okay, from problem set 42. Vrinda was 1.48 meter tall. Vrinda was 1.48 meter tall. After a year, her height become 1.53 meter. After a year, her height is 1.53 meter. Okay. So how many centimeter of her height increase in a year? ठीक है, तो एक ईयर में उसका हाइट कितना इंक्रीज दिया. पहले वृंदा का हाइट था 1.48 मीटर, बट आफ्टर अ ईयर, एक साल बाद उसका हाइट कितना हुआ 1.53 मीटर. सो वी हैव टू टेल देम हाउ मेनी सेंटीमीटर्स वृंदा बिकम टॉलर. तो वृंदा कितने सेंटीमीटर से उसका हाइट बढ़ा. ओके, सो विल डू द सेम प्रोसीजर. विल माइनस फ्रॉम बिगर नंबर टू स्मॉलर नंबर, बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे. सो 1.45 एंड 1.53, इसमें से बिगर कौन सा है? ऑब्वियसली 1.53, करेक्ट नो? 1.48 और यहाँ पे 1.53 है, तो कौन सा नंबर बिगर है? 1.53 ऑब्वियसली. सो विल डू द सब्ट्रैक्शन. 1.53 minus 1.48. 1.48. Okay. Okay. So 3 minus 8 is not possible. So 3 will carry 1. Sorry, 3 will borrow 1 from this 5. So here becomes 13 and 5 ने 1 दे दिया, तो 5 के पास बचा 4. Correct? Now we'll do the subtraction. 13 minus 8. 13 minus 8 is 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो 5 हुआ. 4 minus 5, 4 is 0. 1 minus 1 is 0. And here decimal point will come. तो उसका हाइट कितने सेंटीमीटर से बढ़ा इन अ ईयर? 0.05 मीटर. 0.05 मीटर से उसका हाइट बढ़ा. अंडरस्टूड? सो वृंदा's height increased in a year 0.05 मीटर. तो वृंदा का हाइट कितना मीटर से बढ़ा? 0.05 मीटर. Understood, student? So here we finish the chapter number 9 also, and our semester portion is also over. Okay.